मैं लेके आ गई चाय। हाय, कौन है? पता नहीं, समथिंग केश है। ऋषि। मुझे अभी क्या याद आया बोलो तो? मुझे अभी ना मेरे पड़ोसी वाले अंकल याद आ गए। प्लस साइज मॉडल। तुम बोलो। मैं बोलूं? मैं बोल ही तो रही हूँ। क्यों? मतलब कि ना शुभम आ गया, शुभम सुन लेता है, फिर मैं बोलती हूँ। क्योंकि इसलिए याद आया कि वो अंकल हमेशा ना मुझे परेशान करते रहते हैं। जब से मैंने नीड दिया है ना, तब से परेशान करते रहते हैं। पहले परेशान नहीं करते थे, अभी करते हैं। आई थिंक ही विल बी द सैडेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो। है ना? शुभम, तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? मैं टेस्ट देती हूँ ना। बोलो शुभम, तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? या फिर आ चुका? मुझे भी तो देखना है। फेब एंड या मार्च फर्स्ट वीक। ओह अच्छा। आई थिंक मैंने ना वो एडमिट कार्ड डिलीट कर दिया है। लेकिन आई एम नॉट श्योर, शायद हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने डिलीट कर दिया। पता है मैं कब से ये रिवीजन कर रही हूँ, और रिवीजन करने में भी मुझे एक और, पहले पढ़ लेते हैं ना सब कुछ क्लियर हो गया ऐसा जैसा फील होता है, फिर बाद में टेस्ट देते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस गलत आते हैं, फिर जब रिवीजन करते हैं ना तो फिर से जो समझ गए थे फिर से उसी में प्रॉब्लम आता है। पता नहीं क्या होता रहता है मेरे साथ। ओके, वन मोर इज देयर, एनाटॉमी फिर से रिवाइज करना है क्योंकि वो मेरा थोड़ा वीक पोर्शन है। प्लांट के सारे बच गए, हमें मत देखना, बच गया हमें। कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी सपोर्ट ही करूँगी ना, गलत आया भी, गंदा आया तो भी। इस साल का नीट कब है? इस साल का नीट ना 4 मई में है ऋषि। लेकिन मैंने फॉर्म फिल नहीं किया है। एलेक्स इतना घबरा रहा था कि मुझे लगा आज ही फॉर्म सबमिट करना है क्या। ओके, गुड लक, गुड लक, गुड लक, गुड लक। नहीं, इसको बैक स्पेस दे देते हैं, यही सही है। कहाँ गया एलेक्स? एलेक्स 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 एलेक्स। मैं टेस्ट दूँ क्या अभी? एलेक्स ने मुझे कुछ चैप्टर सेंड किया है जो कि पहले करना है, लेकिन मैं बायो पहले पूरा कंप्लीट करना चाहती हूँ, फिर देख लेते हैं ना। उसने शायद बायो का ही भेजा है। हो गया, पता नहीं क्या। मुझे तो इससे इतना गुस्सा आता है ना, लेकिन मैं नहीं जता सकती गुस्सा भी। कहाँ गया वो पेपर? हाँ, ये वाला।
डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। आई थिंक इसमें सिर्फ बायो का ही है। 62 क्वेश्चंस, मतलब कि 62 क्वेश्चंस, इतना तो आएगा ही। 4 10 जा 40, ओके 62 इंटू 4, 4 जा 4 4 जा 8, 6 1 6 12 16 6 24, 6 1 6 6 12 6 18 6 24, 248 लगा ही था। बायो का ही है, बायो का ही है सारा। मैं ह्यूमन फिजियो पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर देखा जाएगा जो होगा। 248 राइट। क्या मैं इसको दिखा सकती हूँ? ये अगर गिरेगा नहीं तो गिर जाएगा ना। मैं दिखाना चाहती हूँ लेकिन दिखा अच्छे से नहीं दिखा ना। मैंने ना इतना ज़्यादा चाय पत्ती डाल दिया ना, इसका कलर कॉफ़ी की जैसा हो गया है। लेकिन मुझे इतना ये करना ही था क्योंकि वरना मुझे नींद आ जाती है। मैं कितना बकवास करती हूँ, यानी सही बोलता है। अभी मैं पढ़ाई करती हूँ इसलिए मैं टेस्ट देती हूँ। हाँ तब तक एक बार देख तो लो। Separation of homologous chromosomes, no centromere division is observed. Chromosome separation is observed. Anaphase 1, actual reduction division phase. Actual reduction division phase, as half set of chromosome move towards each pole. Actual reduction division phase, as half set of chromosome moves towards each pole. Half set of chromosome moves towards each pole. Okay. Telophase 1, separated chromosomes at its cells. Decondensation of chromosome observed, but not to the extent of telophase of mitosis. Reappearance of nuclear membrane, nucleolus, ER and Golgi bodies. Reappearance of nuclear membrane, nucleolus, ER and Golgi bodies. Cytokinesis, division of the cell follow karyokinesis. Transition between meiosis I and meiosis II. Intermeiosis or interkinesis. Intermeiosis or interkinesis. In interkinesis, DNA replication is not observed. Centriole duplication is observed. Okay. Cytokinesis, DNA replication is not observed. Centriole duplication is observed. Interkinesis or interkinesis or intermeiosis. Transition between meiosis I and meiosis II. That's it. Meiosis II, prophase II, metaphase II, anaphase II. Then we have telophase II, cytokinesis, centromere division, chromatids. Okay, cytokinesis. Okay. G1, number of chromosome and amount of DNA. PG, picogram. PG is picogram. Picogram. PG, picogram. Okay. G1, meiosis I, 46 chromosomes. Meiocyte, the cell which undergo meiosis. Meiocytes are the cell which undergo meiosis. Those are meiocytes. Okay. G1, meiosis I, 46 chromosome. Amount of DNA double. यहाँ नीचे आके आता है ना, 16 pg, picogram, 16 picogram. S phase, meiosis I, 46 chromosome, DNA double, 18 picogram. Sorry, पहले 16 था तो कैसे 18 होगा, 32 होगा ना, 16 का डबल, 32 पिकोग्राम डबल. ओके. G2, meiosis I, G2 of meiosis I. Okay, 46 chromosome remains same. DNA 32 pg. Okay, डबल हुआ था ना तो. Diploid cell 2n. Okay, diploid cell 2n. Meiocytes, the cell which undergo meiosis, 32 pg. G2 32 pg. 32 pg क्या हुआ? अब मैं नहीं देखूंगी. ओके. शुभम ना ऐसे ही टाइम आउट नहीं देता एलेक्स की तरह. कुछ गंदा लिखा होगा तुमने तभी 2 टाइम आउट दिया होगा.
एलेक्स तो सबको टाइम आउट देता है, वो सेंस कर लेता है ना कौन गंदा लिखने वाला है। हाय आयुष, लेकिन ना वांट सम टी और कॉफ़ी? नहीं मेरे पास है, तो मैंने अभी अभी बना के लेके आई। क्या हुआ जॉन विक? मुझे लगा कि तुम अच्छे हो। अब मैं ये टेक्स्ट नहीं देख रही जॉन विक, तुमने जो भी लिखा था, क्योंकि शुभम ने तुम्हें दिल्ली वो कर दिया है। यू आर द, नहीं मेरा दिल ने देखने का दिल किया ना, और मैंने देखा भी। एंड यू आर द वीट और इडियट। तुमने आयुष को बोला कि मुझे बोला? आई डोंट नो, जिसको भी बोला हो। कोई कुछ मत बोलो यार। 46 okay, 46 chromosome, 16 picogram, S phase, 46, 32 picogram. It's okay, Maha. Double one, G2, 46 chromosome, 32 pz. Amount of DNA, picogram, okay. Then this is proof is 1, 46, 32. 46, 32, anaphase. Anaphase ma number of chromosome double हुन्छ, 46 को डबल कति हुन्छ? हाफ भइरहेको छ त यहाँ। देखो exactly same number of chromatid as G2, chromosome number double हुँदैछ। Meiosis I कुन थियो? Anaphase, 46 chromosome, 23 pair, 23 at each pole. (46) 23 pair, 23 at each pole, okay. 46 chromosome, number of chromosome 46, 23 pair, 23 at each pole, हर एक पोल में 23 होगा। 16 pg picogram per pole, 16 picogram per pole. As a cell, 32 picogram. Ti, telophase 1, 46 chromosome, amount of DNA 16 again, 32. Anaphase, 46 chromosome, 23 pair at each pole, 16 pg. As cell is as a cell, one cell of a cell equals to 32 pg total. So 32 pg, 16 pg, 16 picogram per pole, okay. 23 pair at each pole. Anaphase मा 23, anaphase मा के हुन्छ? डिभिजन हुँदाखेरि 23 pair at each pole हुन्छ अनि that is chromosome, okay. DNA चाहिँ 32 छ भने 16 16 each, 16 pg each, okay. Then telophase again, 23 at each pole, 16 pg per pole. Cytokinesis, 23 per each cell, 16 pg. Same amount with respect to G1, okay. Half amount with respect to Z2, okay. With respect to G2 it is half. Cytokinesis हुँदाखेरि Meiosis I को cytokinesis हुँदाखेरि amount of DNA same हुन्छ with respect to G1 but half हुन्छ with respect to G2. G2 को रेस्पेक्ट मा हेर्यो भने half हुन्छ, okay. G1 को रेस्पेक्ट मा हेर्यो भने same हुन्छ, okay. It's okay. Meiosis II, Meiosis I हो गया, Meiosis II, 23 chromosome, 16 pg, okay. Prophase मा same. Anaphase मा 23 chromosomes, 46, 23 23, 46 chromatids, 23 chromatids ऊपर, 23 chromatids नीचे. ये तो बड़ा ही confusing वाला है. 16 pg, no DNA duplication. 16 pg, okay. Anaphase मा 16 pg थियो, 8 pg per pole हुन्छ as a cell. 16 pg छ cell मा 8 pg, 8 picogram per cell. 23 chromosomes, 46 chromatids छ. 23 chromatids माथि जान्छ, 23 मुनि रहन्छ, okay. Anaphase II मा 23 chromatids ऊपर जान्छ, 23 chromatids remaining तल पोलमा हुन्छ. पोलमा DNA duplication भएको हुँदैन, त्यसै कारण के हुन्छ 16 pg डिवाइड भएर 8 pg per pole आउँछ. Telophase II, 23 upon 23, 23 chromosomes, okay.
Result of meiosis 8 picogram. Amount of DNA as a result of meiosis 8 picogram. Half the amount of G1, 1/4 of S and G2. Okay, half the result of meiosis. Jati amount of jati half the amount of G1 and 1/4 of the amount of G2 and S. S phase. Okay. Formula 3. The result of meiosis amount of DNA after meiosis 2. Half of the amount of G1, 1/4 of the amount of S and G2. हो गया तो यही तो ये है इतना कंफ्यूजिंग कोई बात नहीं. Total meiotic division during seed formation. Product of fertilization is seed. Okay, pollen grain and production of pollen grain. One sporogenous cell is equals to 4 grains. 4 pollen grains. One sporogenous cell equals to 4 pollen grain. Pollen mother cell undergoes meiosis to produce 4 haploid pollen grains. 1 meiosis equals to 4 pollen grain. 1 meiosis equals to 4 pollen grain. Egg shell N. 1 megaspore mother cell which is diploid. Okay, to N. 1 megaspore mother cell to N undergo meiosis to produce 4 megaspores. 4 megaspores. 1 functional megaspore egg. Okay, 1 functional megaspore egg. 1 meiosis equals to 1 egg. 3 D's and rates. Illustration. For 1000 seeds, 1000 pollen and 1000 egg. For 1000 seed, 1000 pollen and 1000 eggs. 4 pollen equals to 1 meiosis. Okay, 4000 pollen equals to 4000 नहीं 1000. 4 pollen equals to 1 meiosis. एक meiosis में 4 pollen आ रहा है तो 1000 pollen के लिए कितना meiosis होगा 1/4. Okay, 1000/4. 1/4 into 1000 250 meiosis. एक के लिए तो 1000 meiosis ही होगा क्योंकि एक ही तो एक आएगा एक meiosis से. 1000 egg equals to 1000 meiosis. But for pollen grain it is 250 meiosis. 1/4 into 1000. Total meiotic division is equals to 1000 plus 1000/4. That is 1250. Significance of meiosis. Conservation of specific chromosome. Paradox of meiosis. Conservation of specific chromosomes. Only after fertilization they maintain the 4 to 6 chromosome. Only after fertilization they maintain the 4 to 6 chromosome variation. 4 to 6, 23 plus 23. 4 to 6. Okay. ये वाला काफी कंफ्यूजिंग था ना. फिर से एक बार देखना. हाँ, मुझे नहीं देखना है. कितना कंफ्यूजिंग, कितना मुश्किल है ये चीज़. pair at each pole. Anaphase 1 of meiosis. Anaphase of meiosis. Anaphase of meiosis 1. 23 pair of chromosome. 23 pair of chromosome at each pole. 23 pair of chromosome at each pole. 16 picogram per pole. 16 picogram per pole. Okay. Anaphase मा के हुँदैछ सेपरेट हुँदैछ क्रोमोसोम र डीएनए को अमाउन्ट इक्वल हाफमा बाटिँदैछ. ओके, 32 छ भने 16 pz 16 pz हुन्छ. जुन चाहिँ अमाउन्ट छ 4 to 6 क्रोमोसोमको त्यो 23 पेयर 23 एट इच पोल. क्रोमैटिड की बात हो रही है या क्रोमोसोम की, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब. एक बार एनसीईआरटी देख लेती हूँ. M-phase, prophase, metaphase, anaphase, telophase and cytokinesis. G0, G1, S and G2. G0, G1, S and G2. Okay. Prophase, metaphase, anaphase, telophase and cytokinesis. G0, G1, S, G2. M-phase.
A diagrammatic view of cell cycle indicating formation of two cells from one cell. Okay, early prophase. This is late prophase. Early prophase, late prophase. This is, I think, early metaphase. Transition to metaphase. And this is a metaphase. Okay, centriole, centrosome, astral rays. If they have astrals, anastral, जिसके पास एस्ट्रल नहीं है, एस्ट्रल फाइबर नहीं है, एम्फी एस्ट्रल और क्या था, एक और वर्ड था, एम्फी एस्ट्रल और एनास्ट्रल, एम्फी एस्ट्रल और क्या था एक और वर्ड, एस्ट्रल, एम्फी एस्ट्रल. ओके, एस्ट्रल, एम्फी एस्ट्रल, एस्ट्रल, TRL, एस्ट्रल स्लैश एम्फी, AMPHI, एम्फी एस्ट्रल, ASTRL, astral. Okay, these are aster fiber. Aster fiber. These are absent in plant. Early prophase. Then this is late prophase. ER disappear. Nuclear envelope disintegrate. Nucleolus disappears. Golgi body disappears. Okay, late prophase. Excuse me. Transition to metaphase. Transition to metaphase. This is centrosome. This is also centrosome. These are astral fiber. Transition to metaphase. These are sister chromatids. Sister chromatids. Sister chromatids. Sister. Homologous chromosome. Homologous chromosome. To core. Anaphase. Here, division of centromere. Division of centromere. Chromosomes are trailing behind. Okay, fiber. This is spindle fiber. Shortening of spindle fiber. Centrosome with astral fiber. Okay. Interzonal fiber. Elongation of interzonal fiber. Okay. This is telophase. Centrosome, centrosome, telophase. Okay. Condensation or decondensation. Decondensation of chromosome. The cytokinesis rate. Telophase, anaphase, telophase. This is interphase. Okay, this one is cytokinesis. Cytokinesis. Professor, my mother came. She is scolding me कि पड़ोसी की मुर्गी आके उसने हक दिया है और bro don't spam. Okay. तो बोल रही है कि हम पड़ोसी की मुर्गी को यहाँ पर लेके आके हगा दिया, लेकिन मैंने हगा नहीं दिया, वो खुद ही आके हक दिया. प्रोफेसर 1. तभी तो उसकी मुर्गी ने जब एक बार अंडा दिया था ना, तो मैंने उठा के खा लिया ऑमलेट बना के. प्रोफेसर 1. शुभम को पता है ये वाला इंसिडेंट है ना शुभम. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 एंड देन एनाफेज 1, टेलोफेज 1. प्रोफेज 1, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. ओके, प्रोफेज 1 दो पेयरिंग ऑफ दुईटा क्रोमोसोम. ओके. मेटाफेज सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम त्यसमा के हुन्छ स्पिन्डल फाइबर अफ माइक्रोट्युब्युल्स, काइनेटोकोर. एनाफेज 1, एनाफेजमा 1 मा के हुन्छ सेन्ट्रोमियरको डिभिजन भएको छैन. सेन्ट्रोमियरको डिभिजन भएको छैन. भएको छैन त. सेन्ट्रोमियरको डिभिजन भएको छैन. क्रोमोसोम्स आर ट्रेलिङ बिहाइन्ड. स्पिन्डल फाइबर shortens. Movement of chromosome towards pole. गम्बु आज अझै छिटो आएछ त. बिरामी भएर आएको. ल्या के भयो? भुँडी दुखेर. ल्या तातो पनि तातो थियो. किन जाने? मेरो लुगाहरू त्यस्तो हेरेको आफूले सरम दाराम छैन. आफैलाई सरम लाग्दैन. कतै कतै हेर्छ अर्काको सामानहरू. कहीँको के भएर दुख्यो? मलाई अलिक छिटो आउनु नि हुँदैन. ढलाइ थियो आज, यहाँ हत्तु भएर आएको ढलाइले. ए होइन, अनि भुँडी दुख्यो भन्छ त. नि भुँडी दुख्यो भने पनि थाहा छ. चिया खाने? तेरो घाँटी कस्तो छ? खाँदैन. घाँटीहरू कस्तो? घाँटीले मलाई भन्दैछ कि तिमी मेरो घाँटी साफ गर भनेर. हाम्रो झ्यास पके कता गएछौ? खै कुन त स्टेटस लगाइरहेको हुन्छ त.
त्यो गएको होला पैसा नभएर गरेको होला होइन होला है, पैसा त लाउँछ फोनमा बोल्नु, अरूलाई भनेर भए पनि, मागेर भए पनि, बाँकी खोजेर भए पनि, त्यो बस्छ पहिला। नामसँग हो। आज के डे हो? लेबर डे। आज थर्सडे रहेछ, के को लेबर डे? आज बिहिबार होइन? आज बिहिबार त हो त नि, थर्सडे भन्दैछु त। भोलि शुक्रबार। के साह्रो थाक राजभोज साजभोज छैन। प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 छ त, त्यो उसँग खानु न, चटनीसँग खानु न। खाइस् तैँले चटनी? खाएँ, तर पनि अब हेर्दा नि मजाको छु त्यो चल्यो। आज नि मासु छैन, पैसा यस्तो हो अम्बो। आम्बो आम्फे। अब एउटा दुध लिएर आउँछु तल गएर। मैं तो नहीं खाऊंगी। नखाना त म खान्छु नि। देखो उन्हें हिंदी समझ में आता है, मैंने अभी बोला ना मैं नहीं खाऊंगी, वो बोल रही है कि तू ना खा तू, मैं खाऊंगी अकेले, ऐसा करके बोल रही है। Papa. What's your age by the way? Ayo, I'm 23 bro. Another Shubham is there. शुभम ज्यादा नहीं हुआ क्या? मैं बोलती हूँ ना, शुभम इस चैनल का मोस्ट कॉमन नेम है। किनकि आजले भर्खर भन्दाखेरि पनि अघि थिएन त आएको लाइट, बिहान भोलि थिएन त, दिउँसो थिएन, 2 कि 2:30 बजीतिर होला आएको। Metaphase 1 centrosome, anaphase 1 telophase 1. Are you preparing for what kind of exam? Are you? तुम अगर क्वेश्चन सही से लिखोगे तभी आंसर दूंगी संदेश। प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1। अच्छा पढ़ते हैं ना, बाय द वे मैं बता ही देती हूँ संदेश, तुम अब ज़्यादा टाइप मत करो, मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1 स्टेज ऑफ meiosis 1 प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 anaphase 2 and then telophase. Metaphase, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Okay. Meiosis is the mechanism by which conservation of a specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organisms. Even though the process per se paradoxically result in the reduction of chromosome number by half, it also increases the genetic variability in the population of organism from one generation to next. Variation are very important for the process of evolution. मैं अब एक बार ना टेस्ट देती हूँ, शायद मेरा कुछ अच्छा स्कोर आए। How can you even study? I can see a lot of distraction. How can you even study? Exactly है ना? शुभम अब मैं टेस्ट देने जा रही हूँ, तो अगर किसी ने कुछ मुझे गंदा बोला तो मेरे देखने से पहले ही उसको हटा देना, ठीक है? हाइड ही कर देना उसको चैनल से, फिर कभी आए मत। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। Assertion: Metaphase 2 begins with the splitting of centromere of each chromosome into. Metaphase 2 begins with splitting of centromere of each chromosome into two. Reason: in anaphase 2, chromosome align at the equator. Metaphase 2 begins with the splitting of centromere
of each chromosome. Anaphase 2, chromosome alignment at the equator. True, but reason is false. The recombination nodules that mediate for chromosome recombination appear at interval on the synaptonemal complex during zygotin stage, meiosis stage, and Paquetin stage, diplotin stage. The recombination nodule that mediate for chromosome. The recombination nodule synaptonemal at interval on the synaptonemal complex during Paquetin recombination nodule, right? Yeast can progress through the cell 90 minutes. This is anaphase. Identify the wrong statement regarding the metaphase of mitosis. Condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope. Chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by chiasmata. यही तो wrong है. Meiosis takes place in gemule, megaspore, meiocyte, conidia. Meiosis, megaspore. Megaspore mother cell. Tetrad is made up of 4 non-homologous chromatids, 4 homologous chromosomes, 4 chromatids, 2 homologous chromosomes, and each with 2 chromatids. If meiosis number of chromosome is half during anaphase 1, in meiosis number of chromosome is halved. Spindle fiber attached to kinetochore of chromosome during metaphase. Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? Division anaphase ma huncha. Metaphase 2. Metaphase 1. The role of mitosis is not merely to divide. The role of mitosis is not merely to divide a cell into daughter cell, but to ensure genetic continuity from one cell generation to another cell generation. The mechanism ensuring genetic continuity is formation of two daughter cells. Formation of two cells with identical DNA having the chromosome number between the two new cells. Formation of cell with new chromosome. 90 minutes. Select the correct statement, okay? A, B, C, and D. This is anaphase, metaphase, right? Metaphase, this is prophase. 4 haploid, okay? In stage B, homologous chromosomes are interconnected and chromosomes occurs in pair. Chromosomes are interconnected. Stage A is divisible into 5 substages. Stage D, chromosomes are not enclosed by a nuclear envelope. ये तो गलत है. In stage C, centromere divides and chromosomes are single-stranded. कौन सा वाला करेक्ट है ना? Stage B में interconnected and chromosomes occurs in pair. Meiosis का stage A, prophase, metaphase, anaphase, okay, 4 दे रहा है तो माइटोसिस में नहीं होगा ये भी. ये 2 तो नहीं है. Homologous chromosome is interconnected and chromosome occurs in pair. Centromere divide and chromosomes are single-stranded.
During cell growth, the DNA synthesis takes place. S phase. In meiotic cell division, 56 daughter cells are produced by the two successive division in which meiotic cell division. 56 daughter cells are produced by two successive division in which first division is equational, second is reductional. First is reductional, second is equationally हो सकता है. Which of the following is not a characteristic features during mitosis in somatic cell? Chromosome. Which of the following is not a characteristic features during mitosis in somatic cell? It is not a characteristic features during mitosis in somatic cell. मैं तो पढ़ ही रही हूँ पर्सनल फाइंडर, तू कब पढ़ेगा? तुम लोग बीच बीच में ऐसा टेक्स्ट मत करो ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया. अब रहो कुछ मिनट तक ऐसे ही. Which of the following is not a characteristic feature during meiosis, mitosis in somatic cell? Chromosome movement, synapses. Mitosis में synapses नहीं होता है. In somatic cell cycle, the G1 phase DNA content is double the amount of DNA present in original cell. DNA replication takes place in S phase. A short interphase is followed by a long Z2 phase follows. यही है सही. Why do 1 and 2 represent in the parent cell after meiosis, 2 daughter cell? Parent cell meiosis half होगा ना NN. Daughter cell after meiosis 4. अच्छा 2 daughter cell जिसका होगा 2N और 4 meiosis N होगा. What is true about telophase stage of mitosis? Telophase of mitosis, okay. Chromosome lose their identity, discrete element. Chromosome cluster at opposite spindle pole, nuclear envelope, Golgi. सब कुछ क्या आता है? Reforms. हाँ, telophase में यही होता है. Which of the event listed below is not observed during mitosis? Crossing over. At what phase of meiosis there are two cells, each with separated sister chromatid that have been moved to opposite spindle pole. At what phase of mitosis? At what phase of meiosis there are two cells? At what phase of meiosis there are two cells, each with separated sister chromatid that have been moved to opposite spindle pole? Data cell. Each with separated sister chromatid. Move to opposite spindle pole. Anaphase 2. Chiasmata forms at diplotin. During meiosis 1 in human, one of the daughter cells receives only mature chromosome, maternal chromosome. VJ and S-shaped chromosomes occurs in VJ. Metaphase. नहीं बताया था मुझे.
The enzyme recombination. If both assumption and reason are false, metaphase 2 begins with the splitting of centromere. कहाँ split होता है यहाँ? Each chromosome into 2. Yeah. Meiosis takes place in meiocytes. The spindle fiber attached to kinetochore of chromosome during metaphase. Okay. This one is okay. Parent after meiosis N. Daughter cell after meiosis N. Okay. Production division हो रहा था ना, तो गलत होना ही था. During meiosis 1 in human, one of the daughter cell receives a mixture of maternal and paternal chromosome. Okay. How would the daughter cell at the end of mitosis and cytokinesis compared with their parent cell when it was G1 of the cell cycle? How would the daughter cell at the end of mitosis and cytokinesis compared with their parent cell? Mitosis. Number of chromosome, half amount of DNA, वो भी तो half हो जाता है एनाफेज में. The daughter cell have the same number of chromosome and same amount of DNA. अच्छा, ये मैं वैसे भी गलती करने वाली थी. 24 का ना ये वाला 28, 29 and 30. Which of the following holds true for meiosis? It ensures production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism where fertilization restores the diploid phase. It ensures production of haploid phase. It ensures production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism where the fertilization restores the diploid phase. It ensures production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism where fertilization restores the diploid phase. Okay, correct one. It involves two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis 1 and 2, but only a single cycle of DNA replication. Correct. It involves pairing of homologous chromosome. It involves pairing of homologous chromosome and recombination between them. Homologous chromosome. Correct. 4 haploid cells are formed at the end of the meiosis. All of these are correct. इजी तो था. हाँ, मेरे पास टाइम नहीं था ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ. VJ and I don't know what is this shaped L होगा, I होगा. VJI shaped chromosomes occurs in anaphase. VJI shaped chromosomes occurs in anaphase. Okay. Identify the correct statement with regard to G1 phase, gap 1 of interphase. Reorganization of cell component takes place. Cell is metabolically active, grows but does not replicate in DNA. Replicate its DNA. हाँ, ये तो easy था. हो गया ना ये वाला.
anaphase. VG and I-shaped chromosomes occurs in anaphase. Okay. 4 ही तो skip किया था ना. Same number of chromosome and same amount of DNA. 24 वाला मेरा दिमाग खाएगा शायद. Meiocytes. लिखा था मैंने meiocyte. Deja vu. Meiocyte. Meiosis takes place in meiocytes. Meiocyte नहीं पता है. कोरा सिनी त लागेन छ पानी फिटेको त. The cell which undergoes meiosis diploid cell when the cell which undergoes meiosis meiocytes. मेगास्पोर में भी तो meiosis हुआ था. सेल बोला ना उसने. मेगास्पोर देखो मेगास्पोर में भी तो meiosis हो रहा था. अभी वाला जो था ये वाला मेरा हमेशा गलत होता है. ये वाला. How would the daughter cell at the end of mitosis and cytokinesis compare with the parent cell when it was in G1 of the cell cycle? Daughter cell की बात हो रही है ना यहाँ पर. How would daughter cell at the end of mitosis and cytokinesis compare with their parent cell when it was in G1 of the cell cycle? G1 of the cell cycle. Same number of chromosomes and same amount of DNA. The daughter cell end of mitosis. Daughter cell at the end of mitosis. The end of meiosis. Meiosis and cytokinesis compare with that.
meiosis compare with their parent cell. How could daughter cell at the end of mitosis? End of mitosis and cytogenesis compare with their parent cell when it was in G1 of the cell cycle. The daughter cell have same number of chromosomes. Cell have the same number of chromosome and the number of chromosomes CHRO chromosome same number of chromosome and same chromosomes and the same amount of DNA. Astaghfirullah, that was kinda weird. Same number of chromosome and same amount of DNA. एनाफेज में आधा आधा हो जाएगा. देखो डीएनए भी तो माइटोसिस है फिर भी. V, G and L shaped chromosomes occurs in anaphase. Anaphase, okay. Metaphase V shape, then submeta G and VGL. VG. Okay, meta then. कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये सब. फिर भी कोई ऑप्शन नहीं पढ़ना ही पड़ेगा. गुस्सा भी आता है. टेलोसेंट्रिक आई वाला है ना, तो वी जे है ना, ये वाला एल है. सब मेटासेंट्रिक वाला एल है. सब मेटासेंट्रिक एल. सब मेटासेंट्रिक V L J is J कौन सा वाला है? J वाला है तुम्हारा एक्रोसेंटिक है ना. एक्रोसेंटिक इज J. एक्रोसेंटिक J, मेटासेंट्रिक V, सब मेटासेंट्रिक L. ओके, टेलोसेंट्रिक I, एक्रोसेंट्रिक J, सब मेटासेंट्रिक L, सब मेटासेंट्रिक L. Biomolecules.
cell cycle. एनिमल किंगडम बच गया, एनाटॉमी भी रह गया है. बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, हाँ वो भी करना है. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक और बार करना पड़ेगा यार. राइबोसोम्स में क्या क्या होगा? प्रोटीन एंड आरएनए. Ribosomes are granular structure observed George Ballard Lena 1953 में. They are composed of nucleic acid, RNA and protein and are not surrounded by any membrane. Okay, ठीक ही है, याद है थोड़ा थोड़ा सा. Perinuclear space 10 to 50 nanometer. Perinuclear space 10 to 50 nanometer. Nucleoli singular nucleolus. Nucleoplasm matrix. Okay. Acrocentric, telocentric. Submetacentric, metacentric. Okay. Kinetochore, centriole. But during different stages of cell division, cell shows a structured chromosome in place of the nucleus. Chromatin, DNA and some basic protein called histone and some non-histone protein. Okay, chromatin contain DNA, some basic protein called histone and some non-histone protein and also RNA. थाइलाकोइड, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, थाइलाकोइड ल्यूमेन में लाइट रिएक्शन. नहीं, ल्यूमेन में नहीं होगा, मेम्ब्रेन में होगा. इसमें human neural system. Okay, coordination process through which two or more organs interact and complement their function of each other. Example running. Nervous system and endocrine system. Nervous system coordinated by chemicals called neurotransmitter. They are coordinated by chemicals called neurotransmitter. Neurotransmitter are released in synapses or neuromuscular junction. Neurotransmitter are released in synapse or neuromuscular junction. Effect immediate, short effect as per time. Okay, short time span, short. That is nervous system. Neurotransmitter which are released in neuromuscular junction or synapse. Endocrine system coordinated by chemicals called hormone. Hormones are released in blood. Coordinated by chemicals. Endocrine system coordinated by chemicals called hormones. Okay, starts slow but long lasting effect. Neural system provide organized network of point-to-point connection. Neural system provide organized network of point-to-point connection quick by the help of neurotransmitter release in synapse or NMJ, neuromuscular junction, NMJ. Organized network of point-to-point connection quick. Okay. Endocrine system provides chemical integration through hormones release in blood. Endocrine system provides chemical integration through hormones release in blood. Endocrine system provides chemical integration through hormone release in blood. March, April. Neural system provide organized network of point-to-point connection quick by the help of neurotransmitter release in synapse or NMJ. Endocrine system provide chemical integration through कोई बात नहीं, don't think about it.
लेकिन मेरे दिमाग में चलता रहता है वो सब. Endocrine system provide chemical integration through hormone release in blood. Nerve, bundle of, ये भी तो, ये ब्लड वेसल्स है ना, इसको भी हम नर्व ही बोलते हैं ना. न्यूरल नर्व होता है. आई मुझे गुस्सा आता है, क्या ही कर सकती हूँ मैं, क्या ही कर सकती हूँ. न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड, ये तो बखर पड़ेगा तो ये अभी क्या. नर्व, बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्सॉन plus associated connective tissue in PNS. Bundle of thousands of axons plus associated connective tissue in PNS, peripheral nervous system. That is nerve. If these axons, okay, cell body dendrites, grayish are not myelinated cell body, okay, and dendrites. Okay, axons, myelinated shit, whitish, okay. Bundle of thousands of axons plus associated connective tissue in PNS. They are nerve cell body along with dendrite. If they are present in PNS, then they are known as, I think it starts with the G, right? G. Ganglion. Ganglia, okay. Mass of neuron, cell body located in PNS. If those axons, bundle of axons and associated connective tissue present in CNS, then it is called as tract. Bundle of thousands of axons in CNS, okay. If the cell body and dendrites are present in CNS, then they are nucleus. Mass of neuron cell body located in CNS nucleus, okay. Plexus is a network of neuron. Plexus, network of neuron, okay. Receptors, structure of nervous system that monitors changes in external or internal environment. Excuse me. The structure of nervous system that monitors change in external or internal environment. Structure of nervous system that monitors change in external or internal environment. Hey. Structure of nervous system that monitors change in external or internal environment. Nerve fiber, general term for any neuronal. Nerve fiber, general term for any neuronal process that emerges from cell body of the neuron. Generally, it is a term for axon, as dendrites are very smaller. Nerve fiber, anything that emerge from cell body. General term for any neural process that emerge from cell body of the neuron. Okay, nerve fiber. Those are nerve fiber. Gray matter, composed of neuronal cell body. The dendrites and neuroglia. Composed of neuronal cell body, the dendrites and neuroglia. They are gray matter. White matter are axons. Composed of primarily myelinated axons. The whitest color of myelin gives white matter its name. Whitest color of myelin gives white matter its name. Okay, gray matter contains cell body and dendrites along with neuroglia, white matter. Certain axon. There's a gray matter, and then we have white matter. Gray matter, white matter, nerve fiber. Receptors, tract, ganglia, nerve, nucleus, and plexus, network of neuron. I think these are important. Nerve, PNS, okay. Axon, bundle, ganglia, PNS, cell body, okay. Then plexus, network of neurons. And then we have receptors, because a nerve fiber that arises from cell body, gray matter and white matter.
मसल को दे रहे हो या इनवॉलेंट्री ऑर्गन को दे रहे हो, विसीरल ऑर्गन को दे रहे हो, इंटरनल ऑर्गन को दे रहे हो। विसीरल ऑर्गन तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर विसीरल वर्ड यूज करो तो विसीरल नर्वस सिस्टम में डाल दो। किसी इंटरनल ऑर्गन को दे रहे हो तो एएनएस। एएनएस के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड में भी मिलता है, लेकिन उनका लोकेशन उल्टा हो जाता है। जैसे ब्रेन में, सेरिब्रम में ग्रे मैटर बाहर मिलता है, व्हाइट मैटर अंदर मिलता है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर मिलता है, तितली की शेप का। जैसे मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें ग्रे मैटर अंदर मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन दिखा रही हूँ मैं, उसमें से तितली की शेप का ऐसे ये ग्रे मैटर मिलता है अंदर। न्यूरोनल सेल बॉडीज यहाँ पे पड़ी होती है और ये पोजीशन। यहाँ पे व्हाइट मैटर पड़ा होता है जो ट्रैप्स है। यहाँ पे व्हाइट मैटर पड़ा होता है, उल्टा होता है स्पाइनल कॉर्ड में। अब मैं उतना ही कराऊंगी जितना आपको पेपर के लिए जरूरी है। मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम। हाँ वही 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 वही, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम। Neuron, excitable cells. Neuroglia. Neuroglia. Excitable cells. Neuroglia helps neuron, protects research neuron. Helps neuron, protects, nourishes. Help neuron. Helps neurons, protects, nourishes. Neuron helps neurons, protects and nourishes neurons. Neuron protects and nourishes neurons. More than 50% volume of neural system. Percent neural system.
न्यूरॉन्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, जो सबसे helps neurons non-excitable. इसका भी आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है, इसकी लोकेशन भी चाहिए, सबकी लोकेशन पता होनी चाहिए आपको कहाँ है। जैसे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, इसमें क्या होता है, बहुत सारे डेंड्राइट्स, एक एक्सॉन। देन सेकंड कौन सा होता है, बायपोलर, जिसमें एक डेंड्राइट, एक एक्सॉन। ये कहाँ पे मिलता है, रेटिना में। जो रेटिना में, आई में, रेटिना में जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, बीच वाली जो लेयर होती है, फोटोरिसेप्टर गैंग्लियोनिक सेल्स के बीच में जो होती है, बाइपोलर लेयर होती है। ये आ जाता है नीट में क्वेश्चन। देन थर्ड है यूनिपोलर, ये घर का ना घाट का, ये बेचारे एक ही प्रोजेक्शन लेके बैठे, बताओ तुम्हारा क्या करेंगे हम। तो ये जनरली एम्ब्रियोनिक स्टेट में होती है। दिमाग में बिठाओ साथ साथ में, जब मैं पढ़ा रही हूँ दिमाग में बिठाओ इसको। फोर्थ होता है सूडो यूनिपोलर, फोर्थ होता है सूडो यूनिपोलर, जो पहले ऐसे दिखाता है कि एक ही हूं मैं, लेकिन फिर दो पार्ट्स में आके डिवाइड हो जाता है। इसका लोकेशन ध्यान रखेंगे, डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व, डोर्सल रूट गैंग्लिया, ये एनसीईआरटी में है, ऑफ स्पाइनल नर्व। मैंने ये डिटेल लेक्चर में बताया क्या होता है। ये बेसिक से आपके न्यूरॉन्स के वो है, टाइप्स है। अब आ जाओ न्यूरोग्लिया पे। अब न्यूरोग्लिया डिपेंड करता है, तुम सीएनएस का न्यूरोग्लिया बात कर रहे हो या पीएनएस का न्यूरोग्लिया बात कर रहे हो। न्यूरोग्लिया सीएनएस में अलग होएगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग होएगा। जैसे कि श्वान सेल एक सपोर्टिंग सेल है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वो कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आता और वो माइलिन शीथ बनाता है। तो श्वान सेल इज अ न्यूरोग्लिया इन पीएनएस। अगर कोई माइलिन शीथ की नेचर पूछेगा तो फैटी होता है, वो लिपिड होता है, ठीक है। अगर सीएनएस में मैं बोलूंगी फिर माइलिन शीथ कौन बनाता है, तो यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है बेटा, ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है। ये सेम काम करता है, माइलिन शीथ बनाता है सीएनएस में, वो पीएनएस में माइलिन शीथ बनाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रकार के बेटा न्यूरोग्लिया होते हैं, बट अपने को जरूरत नहीं पड़ती, इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए। हो गया, चलो आगे। न्यूरॉन मल्टीपोलर, multipolar, polar brain cord, okay. With one axon, two or more dendrite. One axon or more dendrites. Brainless spinal cord. Multipolar. With one axon and two or more dendrites found in cerebral cortex. Cerebral cortex. Brainless spinal cord. Cerebral, C-E-B, cerebral, cerebral cortex, cerebral cortex, cerebral cortex, cerebral cortex. Bipolar, retina of eye, okay. Cerebral cortex, bipolar with one axon and one dendrite. One axon, one dendrites. Bipolar. Example, retina. Unipolar cell body with one axon only.
यूनिपोलर एम्ब्रियो माउंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियोनिक स्टेज no dendrites pseudo unipolar myelinated and non-myelinated. The myelinated nerve fibers are okay. Dorsal root ganglia of spinal nerve. Neuroglia, neural system. Neural nervous system of CNS and PNS. Myelin sheath. Produced in by in CNS oligodendrocytes in PNS Schwann cells SWAN SCH SCHWANN 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 cells in PNS. Okay, myelin sheath. स्पाइनल नर्व। मैंने ये डिटेल लेक्चर में बताया क्या होता है। ये बेसिक से बीच वाली जो लेयर होती है फोटो रिसेप्टर गैंग्लियोनिक सेल्स के बीच में जो होती है बाइपोलर लेयर होती है। ये आ जाता है नीट में क्वेश्चन। देन थर्ड है यूनिपोलर, ये घर का ना घाट का। ये बेचारे एक ही पोजीशन लेके बैठे, बताओ तुम्हारा क्या करें। तो ये जनरली एम्ब्रियोनिक स्टेट होती है। दिमाग में बिठाओ इसको, साथ साथ में मैं पढ़ा रही हूँ, दिमाग में बिठाओ इसको। फोर्थ होता है सूडो यूनिपोलर। फोर्थ होता है सूडो यूनिपोलर, जो पहले से दिखाता है कि एक ही है लेकिन फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसका लोकेशन ध्यान रखेंगे, डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व। डोर्सल रूट गैंग्लिया एनसीईआरटी में है ऑफ स्पाइनल नर्व। मैंने डिटेल लेक्चर बताया क्या होता है। डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ dorsal root ganglia of spinal cord. First one. Dorsal root ganglia of spinal cord. ये बेसिक से आपके न्यूरॉन्स के वो है टाइप्स है। अब आ जाओ न्यूरोग्लिया पे। अब न्यूरोग्लिया डिपेंड करता है तुम सीएनएस का न्यूरोग्लिया बात कर रहे हो, पीएनएस का न्यूरोग्लिया बात कर रहे हो। न्यूरोग्लिया सीएनएस में अलग होगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग होगा। जैसे कि श्वान सेल एक सपोर्टिंग सेल है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वो कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आता, वो माइलिन शीट बनाता है। तो श्वान सेल इज अ न्यूरोग्लिया इन पीएनएस। अगर कोई माइलिन शीट की नेचर पूछेगा तो फैटी होता है, वो लिपिड होते हैं, ठीक है। अगर सीएनएस में पूछेगा माइलिन शीट कौन बनाता है, यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है। ये सेम काम करता है, माइलिन शीट बनाता है सीएनएस में, वो पीएनएस में माइलिन शीट बनाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रकार के न्यूरोग्लिया होते हैं, मतलब होते हैं। इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए। हो गया, चलो आगे। मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम देख ले, उसमें से देख ले क्या क्वेश्चन आ सकते हैं अपने को। बहुत बढ़िया बच्चे, सब हाँ बोल दो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अपनी शक्ल को साइड में कर लेती हूँ। फाइनली तुम्हारी इतनी सारी रिक्वेस्ट और कमेंट के बाद हम लेके आ चुके हैं नीट फिजिक्स की फॉर्मूला शीट।
ये फॉर्मूला शीट डेडिकेटेडली नीट के लिए है और ये नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन करी है। हमने इसमें सारे के सारे 11, 12 और जो 11, 12 के अलावा फॉर्मूलाज होते हैं, सिलेबस एक्स्ट्रा होता है नीट में, वो हमने सारे के सारे इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं। इसकी मदद से तुम अपनी पूरी की पूरी फिजिक्स को 30 से 40 मिनट में इजीली रिवाइज कर लोगे, क्योंकि हमने इसमें हर चैप्टर को 1 से 2 पेज में खत्म कर दिया है। हमने इसमें छोटे से छोटा बुला भी लिखा है। हमने इसमें एनसीईआरटी का यूज किया, नीट वाली डेडिकेटेड बुक्स का यूज किया। हमने नीट का प्रीवियस ईयर उठाया, उसमें से जो हमारे को फॉर्मूलाज मिले जो जनरली नहीं मिलते हैं, हमने वो भी इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं, जिससे तुम्हारे को नीट का प्रीवियस ईयर सोल्व करते कोई भी दिक्कत ना आए और तुम नीट में 180 में से 180 स्कोर इजीली कर पाओ। क्योंकि देख भाई, अगर तेरे को नीट में फोड़ के आना है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तू जितनी बार रिवीजन कर लेगा तेरे लिए उतना ही बेटर है। वहाँ एमसीक्यू आने वाला है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि तेरे को सारा के सारे फॉर्मूलाज याद हो अच्छे से उंगलियों पे। वहाँ इफ देन नहीं चलता कि जरा सी गलती मतलब गलत, तो तेरे को फॉर्मूला के लिए तो दिक्कत होते। जितने भी सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं 23-24 क्या है बुक का नाम? www.नीट का NCERT कक्षा.com www.ncert कक्षा.com kksha.com नीट NCERT कक्षा.com। ओके, देखने में तो सही लग रहा है। ठीक है, चलो मान के चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। रूट spinal nerve later divides into two. ठीक है, अब एक मल्टीपोलर न्यूरॉन की फोटो देखो। ये सेल बॉडी है, इसको साइटोन भी कहते हैं, इसको कैरियन भी कहते हैं, जिसमें एक न्यूक्लियस है। यहाँ से इनकमिंग सिग्नल्स को कैच करने के लिए डेंड्राइट है। साइटोप्लाज्म में जो सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म है, जो डेंड्राइट्स है, इसमें छोटे-छोटे ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूरॉन का। इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स या निसल्स बॉडीज। क्वेश्चन नीट में ये आया था कि निसल ग्रेन्यूल का केमिकल नेचर क्या होता है। बेटा ये यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बनाते होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से बनके यहाँ पे स्टोर होता है, जो साइनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, एक सपोर्टिंग सेल है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वो कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आता और वो माइलिन शीथ बनाता है। तो श्वान सेल इज अ न्यूरोग्लिया इन पीएनएस। अगर कोई माइलिन नेचर पूछेगा तो फैटी होता है, वो लिपिड होता है। ठीक है, अगर सीएनएस में मैं बोलूंगी फिर माइलिन शीथ कौन बनाता है, तो यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है बेटा, ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है। ये सेम काम करता है, माइलिन शीथ बनाता है सीएनएस में, वो पीएनएस में माइलिन शीथ बनाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रकार के बेटा न्यूरोग्लिया होते हैं, बट अपने को जरूरत नहीं पड़ती। इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए। हो गया, चलो आगे। root ganglia of spinal no मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम देख ले, उसमें से देख ले क्या क्वेश्चन आ सकते हैं अपने को। बहुत बढ़िया प्रशस्ति, सब हाँ बोल दो। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अपनी शक्ल को साइड में कर लेती हूँ। ठीक है, चलो मान के चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब एक मल्टीपोलर न्यूरॉन की फोटो देखो। ये सेल बॉडी है, इसको साइटोन भी कहते हैं, इसको कैरियन भी कहते हैं, जिसमें एक क्या कहते हैं न्यूक्लियस है। यहाँ से इनकमिंग सिग्नल्स को कैच करने के लिए डेंड्राइट्स हैं। साइटोप्लाज्म में जो सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म है और जो डेंड्राइट्स है, इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूरॉन का। इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स या निसल्स बॉडीज। क्वेश्चन नीट में ये आया था कि निसल ग्रेन्यूल का केमिकल नेचर क्या होता है। बेटा ये यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बनाते होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से बनके यहाँ पे स्टोर होता है, जो साइनेप्टिकल वेसिकल्स होता है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, ये बेसिकली राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि ज्यादा
सब्जी आलु हाँ तास से खा लो है के चाहिए पानी तातेर छ ये लैजाने बोतल ल्याउँछु बोतलमा नि अझै तपाईँ बोतलमा नि हालिदिनु Why my mother always scolds me? मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ अम्मा बोल रही कि पानी गर्म कर दिया है ना, लेकिन वो यहाँ पर डाल के नहीं देंगी क्योंकि गर्म भी कर देना, तेरे बोतल में भी डाल देना, ऐसा करके वो डांट रही है। और शायद मुझे खाना खाने के लिए भी बुला रही है, लेकिन अभी खाया ना, लेकिन मैं फिर से खाऊंगी क्योंकि आई लव राइस, और राइस के साथ साथ पोटैटो भी है क्योंकि आई लव राइस। मुझे भूख भी नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मैं लेके आई और मैं खाऊंगी। फिर से मेरा पेट फूल जाएगा, फिर से मैं सो जाऊंगी शायद। न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोटीन्स होते हैं, प्लस ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के गुच्छे भी होते हैं। सो इट इज राइबोसोम प्लस आरईआर। साइटोप्लाज्म में जो सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म है और जो डेंड्राइट्स है, इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूरॉन का। इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स या निसल्स बॉडीज। क्वेश्चन 8 में ये आया था कि निसल ग्रेन्यूल का केमिकल नेचर क्या होता है। बेटा ये यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बनाते होते हैं।
न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से बन के यहाँ पे स्टोर होता है, जो साइनेप्टिकल वेसिकल्स होता है ना ऐसे ऐसे यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। ये बेसिकली राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि ज्यादातर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोटीन्स होते हैं, प्लस ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के गुच्छे भी होते हैं। सो इट इज राइबोसोम प्लस RER। एक्सॉन में आपको निसल ग्रेन्यूल कभी नहीं मिलेगा। देखो इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, इसके अंदर आपको निसल ग्रेन्यूल कभी नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बन रहा। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यहीं पे ही बन रहा है, डेंड्राइट के साइटोप्लाज्म उसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, एंड जो सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में होता है। एक्सोप्लाज्म में कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये सिग्नल जो रिसीव करते हैं हम डेंड्राइट से करते हैं, लेकिन जो अगले न्यूरॉन को पास करते हैं वो एक्सॉन की हेल्प से करते हैं। ये जो चौड़ा सा स्ट्रक्चर है इसको एक्सॉन हिलक बोल देते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो पार्ट है ये वाला इसको एक्सोप्लाज्म बोल देते हैं, यहाँ पे जो लिक्विड है। इसकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है ये वाली, इसको बोल देते हैं एक्सोलेमा। तो ये एक्सोलेमा है। एक्सोलेमा के ऊपर श्वान सेल चिपका होता है। श्वान सेल क्या करता है, वो अपनी सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारा माइलिन भर लेता है और श्वान सेल ऐसे लिपट जाता है एक्सॉन के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो शीट सी बना देता है इसको माइलिन शीट बोल देते हैं। श्वान सेल के सेल मेम्ब्रेन में माइलिन भरा होता है, इसलिए श्वान सेल लिपट के माइलिन शीट बना देता है। दो माइलिन शीट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे मिलता है श्वान सेल, CNS में तो मिलता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि श्वान सेल अपनी मेम्ब्रेन में माइलिन नहीं भरता, तो श्वान सेल तो लिपट जाता है लेकिन माइलिन नहीं भरता अपनी मेम्ब्रेन में। तो ऐसा हो सकता है कि श्वान सेल लिपटा हुआ हो लेकिन माइलिन शीट ना बने। दोनों ही केसेस हो सकते हैं कि श्वान सेल लिपटे और माइलिन बन जाए अगर उसकी मेम्ब्रेन में माइलिन है तो, और अगर मेम्ब्रेन में माइलिन नहीं है तो बिना माइलिन शीट बनाए हुए श्वान सेल लिपट सकता है। यहाँ पे इसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, जहाँ पे ऐसे ब्रांचिंग हो जाती है, ठीक है। जहाँ ये ब्रांच होती है मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से बना देती हूँ। यहाँ पे ब्रांच ना ऐसे ऐसे वेसिकल्स बनाती है जिसको साइनेप्टिक एंड बल्ब्स बोलते हैं, और इसमें ऐसे वेसिकल्स, इसके अंदर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर से भरी वेसिकल्स होती है जिसको साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। मतलब साइनेप्टिक एंड बल्ब्स के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होती है न्यूरोट्रांसमीटर से भरी हुई, जो कि एक्साइटमेंट आने पे या सिग्नल आने पे यहाँ पे रिलीज हो जाती है। इस स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में पड़े हुए स्पेस को, ठीक है। सो अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, नर्व इंपल्स जनरेट होना। नर्व इंपल्स क्या होते हैं? तो बेटा जो नर्व इंपल्स पढ़ते हैं हम न्यूरॉन में वो हम एक्सॉन में पढ़ते हैं। नर्व इंपल्स यहाँ से जनरेट होती है एक्सॉन से, एक्सॉन की मेम्ब्रेन में। वी जस्ट टॉक अबाउट एक्सॉन। तुम कहोगे यहाँ पे बेटा ये स्टिमुलस गेन कर सकता है ये वाला एरिया, ठीक है, रिसेप्टर से या किसी और तरीके से, लेकिन जो कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स है वो यहाँ पे होगी। सब कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इंपल्स कंडक्शन का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट मूव करना होता है। इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे केमिकल रिलीज हो जा रहा है। ये केमिकल अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे लग जा रहा है, वहां पे फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दे रहा है। आओ हम कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ें। न्यूरोलेमा क्या होता है? मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही न्यूरोलेमा डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि न्यूरोलेमा पे क्वेश्चन नहीं आ रहा अभी, बट मैं आपको बता देती हूँ न्यूरोलेमा क्या होता है। क्यों चाहिए आपको यार, रहने दो, फालतू में कंफ्यूज हो गए। माइलिन शीथ पढ़ लो, नोड ऑफ रैनवियर पढ़ लो, एक्सोलेमा पढ़ लो, न्यूरोलेमा रहने दो। It's okay, Ma. That's okay, bro.
Are you a student who learns from YouTube videos or attends online classes? Video notebook will make. चले आगे, आ जाओ. जनरेशन एंड कंडक्शन. ओह शिट, मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा था लिखने के लिए चीजें, पर मैंने वो ब्लैंक स्लाइड पे लिख दी. नहीं तो तुम्हें नोट्स में मिल जाती वो चीजें जो मैंने लिखी थी. कोई बात नहीं. जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. अब इसको स्टेप वाइज मेरे साथ याद करते चलना है. अगर आपको याद नहीं होगा तो आप वहां पे गलती करने के चांसेस बनते होते हैं. देखो, क्वेश्चन नहीं आ रहा अभी, बट मैं आपको बता देती हूँ न्यूरोलेमा क्या होता है. क्यों चाहिए आपको यार, रहने दो, हाल तुम्हें कंफ्यूज हो गई. माइलेज पढ़ लो, नोडोग्राम पढ़ लो, एक्सोलेमा पढ़ लो, न्यूरोलेमा. चले आगे, चले आगे, आ जाओ. जनरेशन एंड कंडक्शन. ओह शिट, मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा था लिखने के लिए चीजें, पर मैंने वो ब्लैंक स्लाइड लिख दी. नहीं तो तुम्हें नोट्स में मिल जाती चीजें जो मैंने लिखी थी. कोई बात. सारा किचनमा को बसेछ हौ. किन सिक्रेटको ठुटा थियो र. खै थाहा पाएन. कोही बस्यो भने पनि त थाहा त हुँदैन दिउँसो कति ढिलो उठ्छु. होइन बिहान बिहान नै बिहान नै म उठ्दा ताला अगाडि कहिलेको त होइन होला नि, कि तातो तातो थियो. होइन. तातो तातो चाहिँ होइन कि, अब बेलुकासम्ममा थिएँ. के गरेको पनि थिएन. त्यही ग्यासको टेबलको छेउमा थियो, तल मुनि भुइँमा. दिउँसो पनि सिगरेट खाने त कोही आयो जस्तो लागेन. सिगरेट त कसले खान्छ र. होइन बेलुका पनि म ढिलो सुतेको थिएँ हिजो त नि झन्. कसले खाएको थियो. यति नै थियो, यति चाहिँ खाएछ हो. मलाई पो लाज लाग्यो, किन घरमा त आमा र म मात्रै बस्दा म रातभरि उठ्छु नि. अन्त सिगरेटको ठुटा थियो, ताला बन्द गरे. केटाहरू बसेर एकछिन ल, म बेलुका कति बजीसम्म हिजो सुतेँ भन्नु त. म हिजो छिटो सुतेन त. म हिजो त छिटै सुतेँ नि त. लाइट गयो नि त, पानी पऱ्यो नि त बेलुका. 2:30 सम्म त थिएँ जस्तो लाग्यो. म अचम्मै लाग्यो. भात खानु ओर्नु. भात खाइस्. भात खाएँ. त बेलुकासम्म सुत्दैन, त्यसले गर्दा किचन खुलै हुन्छ. किचन सुत्ने बेलामा बन्द. त्यहाँ बेलुकै आएर खायो भने तल थाहा पाउँदैनस् नि त. पानी पनि परेको हुन्छ नि त. पानी पर्छ हो. मैले थाहा पाउन, तैँले थाहा पाउनु. ल होइन, बेलुका यहीँनिर लागेर राख्नुपर्छ कि चाबी. फेरि बादमा लाउँदा निक्लिँदाखेरि लाउँदै गर्दाखेरि हुन्छ नि त. जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. अब इसको स्टेप वाइज मेरे साथ याद करते चलना है. अगर आपको याद नहीं होगा तो आप वहाँ पे गलती करने के चांसेस बनते हैं. देखो, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर पोलराइज्ड. न्यूरॉन्स जब वो रेस्ट में होते हैं, जब वो कोई चीज कंडक्ट नहीं कर रहे होते, तो उनको होता है रेस्टिंग स्टेट में है न्यूरॉन्स. ध्यान से सुनिए मेरी बात. कैसे कैसे चस्के लग गया तुम लोगों को कि मैम 2019 में जब हाथ में माइक लेके पढ़ाते थे तो आप बहुत अच्छे लगते थे. मैम प्लीज माइक हाथ में ले लीजिए. तो टेक्नोलॉजी हमारे पास कम थी, हम लोग गरीब होते थे, इतने महंगे माइक खरीदने के पैसे नहीं होते थे, खराब हो जाता था माइक. अब ये 23,000 का माइक खरीदा है, अब मैं क्या करूँ, उसको हाथ में पकड़ के घूमूं जस्ट बिकॉज तुम लोगों को पहले की याद आ जाए कि यार मैम ऐसे पढ़ाती थी उस टाइम पे, मजे आ जाते थे. ये क्या बकवास है. सुनो, पोलराइज का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखो. सब चीज जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा वैसे वैसे मैंने लिखा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको ये आ जाएगा. ठीक है, आ जाओ. चलो यार, न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर पोलराइज्ड. पोलराइज्ड का मीनिंग क्या है, रेस्ट में पोलराइज्ड होती है. पोलराइज्ड का मीनिंग होता है कि मेम्ब्रेन के एक साइड, मान लो जैसे एक जोन है, मेम्ब्रेन के एक साइड कोई चार्ज होना और मेम्ब्रेन की दूसरी साइड कोई और चार्ज होना, ये पोलराइज्ड स्टेट होती है. जैसे रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है एज कंपेयर टू इनसाइड. इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं. ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज होता नहीं है, बट एज कंपेयर टू आउट हम इसको नेगेटिव मान लेते हैं रेस्टिंग स्टेट में.
ये एक पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, जहां जिस मेम्ब्रेन के साथ में एक साइड पे कोई और चार्ज है एज कंपेयर टू दूसरी साइड पे। और आपको ये भी याद रखना है कौन सा कहाँ पे है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव है, ये पोलराइज्ड स्टेट है। ठीक है, इनर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज्ड एज कंपेयर टू, ठीक है। न्यूरॉन इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट इज नॉट generation and conduction of nerve impulse, conduction of nerve impulse. Okay. Generation and conduction. Nerve impulse. Neurons are excitable cells because the membranes are polarized. Neurons are excitable cells. Their membranes are polarized.
Neuron is said to be at rest. The neuron is said to be at rest when it is not conducting an impulse. Conducting an impulse, ये resting potential है. रेस्टिंग पोटेंशियल आपको याद रखना है कितना ये जो अक्रॉस मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट है अंदर माइनस में एज कंपेयर टू आउटसाइड. और ये जो चार्जेस हैं बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास है बेटा. यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये चार्जेस आपको क्या सेंटर ऑफ द एक्सॉन में मिलेंगे कि बिल्कुल पास मिलेंगे, जो मेम्ब्रेन के बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास मिलेंगे. ठीक है, सो बिल्कुल यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल है. हम आगे देखो, पहले हमें इस बात पे क्वेश्चन पीवाईक्यू इस पे भी आए हुए हैं कि व्हाई इज द मेम्ब्रेन पोलराइज्ड. इसका इंपल्स जनरेशन तो हम करेंगे बाद में. पहले तो हमें ये बात करनी है कि पोलराइज क्यों हो भैया. तो उसके 3 मोटे मोटे रीजन दिए हुए हैं. पढ़ने में आलसी आ रही है मुझे. आई नो शुभम इज देयर, इसलिए मैं ओके नहीं, मैं चैट्स ऑन करने वाली थी शुभम के लिए, लेकिन फिर बहुत सारे लोग आ गए ना, नहीं करते हैं. फिर कोई नेगेटिव कमेंट कर देगा, फिर मुझे पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा. जब हम आँखों को बंद करते हैं ना, तब हम लोगों की आँखों के सामने तारे तारे आ जाते हैं. अयो, मैं जब भी चैट ऑन कर देती हूँ, क्यों यहाँ पर लोग आ जाते हैं. मैं ऑफ कर दे रही फिर से. सीआरटी में पहला मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं पोटेशियम पंप, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम इनसाइड द. तो भैया जरूरत से ज्यादा तुम पॉजिटिव चार्ज 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर फेंक रहे हो और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर रख रहे हो, तो एज कंपेयर टू आउटसाइड अंदर तो कम पॉजिटिव हुआ ही. ठीक है, नेगेटिव अगर एज कंपेयर टू आउटसाइड देखो तो अंदर नेगेटिव है ना. सो पहला रीजन तो ये हो गया. देन नीट में क्वेश्चन आया था व्हिच इज द अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन. सेल के अंदर सबसे ज्यादा आयन कौन सा होता है. भैया इन्हीं पंप्स की वजह से सबसे ज्यादा पोटेशियम अंदर बढ़ता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर फेंकता है. ये भी पीवाईक्यू है कि पंप एटीपी यूज करके कितना क्या चीज बाहर फेंकता है. 3 सोडियम बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम अंदर फेंकता है. एक तो ये नीट का क्वेश्चन है डायरेक्टली. दूसरा व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन, के पॉजिटिव है. ये एक नीट का क्वेश्चन है. ठीक है, पहला रीजन हो गया. दूसरा रीजन मेम्ब्रेन is membrane polarized.
during rest. Why is the membrane polarized during rest? Sodium and potassium pump transport 3Na. Inside the cell. K plus is the most abundant intracellular ion. K plus is the most abundant. कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू के पॉजिटिव। देखो पहले तुमने के पॉजिटिव अंदर भर दिया, Na पॉजिटिव को बाहर रख दिया, लेकिन एट रेस्ट अभी तो कोई इंपल्स कुछ जनरेट नहीं हो रहा है। एट रेस्ट जब एक्सॉन ऐसे आराम से निन्नी कर रहा है, कुछ नहीं इंपल्स कुछ नहीं कर रहा, membrane is comparatively more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium। ज्यादा परमिएबल है पोटेशियम में। अच्छा भाई मेरे को याद आ गया, मेरे को तुम लोगों को बताना था, अभी मेरी अनअकैडमी की टीम से बात हुई थी। लास्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पेपर अभी इस कमिंग संडे को है, ठीक है, डेट देख लेना, 29 है, 30 आई थिंक 30 है। उसके बाद कोई मॉक टेस्ट नहीं है अनअकैडमी की तरफ से जो आप लोगों के लिए किया गया। ये 7वां और आखिरी मॉक टेस्ट है, 2 बजे से लेके वही 5:20 तक, जैसे कि एक्चुअल में नीट का टाइम होता है। तो तुम लोगों को ये मॉक टेस्ट देना है। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट वाली स्लाइड लगा दी है, वो स्कैनर है, वहाँ पे वो स्कैन करके कर लेना है। कोड RITU आपने डालना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने वो टेस्ट देना है। आप जाओ देखो, जाना कहीं नहीं, घर बैठ के देना तुम लोगों ने। भैया मॉक करो, मॉक तो मिलते नहीं है करने के लिए, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट मेरे दिमाग में आ गया था एकदम से, ये चीज मुझे तुम लोगों को याद करानी है। तो भैया मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली कमिंग बैक, मेम्ब्रेन इज comparatively more permeable to sodium and nearly impermeable to more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium, ठीक है। सो उससे क्या होता है, बाहर तुमने Na पॉजिटिव रख दिया, अंदर तुमने पोटेशियम रख दिया, तो पोटेशियम तो बाहर लीक कर जाएगा along the concentration gradient, बाहर पोटेशियम कम है, अंदर ज्यादा है, तो जो पॉजिटिव चार्ज तुमने अंदर भरा था वो भी बाहर निकल रहा है। सोडियम अंदर जा नहीं पा रहा बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल। जो रेस्टिंग स्टेट में जो इसकी मेम्ब्रेन है एक्सॉन की, वो इम्परमिएबल है। सो जो पॉजिटिव चार्ज भरे थे वो भी बाहर निकल गया, इसलिए अंदर और नेगेटिव हो गया। दूसरा रीजन समझ में आ गया। और तीसरा रीजन है मेम्ब्रेन able to negatively charged proteins present in exoplasm। सेल के अंदर जो नेगेटिव प्रोटीन्स थे उसके लिए भी इम्परमिएबल है मेम्ब्रेन, तो ये बाहर नहीं जा पा रहे, ये बाहर नहीं जा पा रहे, ये अंदर गिर रहे हैं। तो अंदर इन 3 चीजों की वजह से नेगेटिविटी का माहौल बन गया है, -70 मिलीवोल्ट का माहौल बन गया हुआ है। समझ में आ गया। अब हमने करनी है इंपल्स जनरेशन। तीसरा रीजन है मेम्ब्रेन, ठीक है।
membrane is comparatively more permeable membrane is comparatively more permeable to K plus, nearly impermeable membrane is comparatively more permeable to K plus and nearly impermeable. Membrane is comparatively more permeable to K plus and nearly impermeable to Na plus. Ion channel. Membrane is comparatively more permeable to K plus and nearly impermeable to Na plus. So even more positive charge outside. हाँ, सो उससे क्या होता है, बाहर तुमने Na पॉजिटिव रख दिया, अंदर तुमने पोटेशियम रख दिया, तो पोटेशियम तो बाहर लीक कर जाएगा along the concentration gradient. बाहर पोटेशियम का में अंदर ज्यादा है, तो जो पॉजिटिव चार्ज तुमने अंदर भरा था वो भी बाहर निकल रहा है. सोडियम अंदर जा नहीं पा रहा बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल. जो रेस्टिंग स्टेट में जो इसकी मेम्ब्रेन है एक्सॉन की वो इम्परमिएबल है. सो जो पॉजिटिव चार्ज भरे थे वो भी बाहर निकल गया, इसलिए अंदर और नेगेटिव हो गया. दूसरा रीजन समझ में आ गया. और तीसरा रीजन है मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म. polarized steering rest. Okay. Membrane is impermeable to negatively charged protein. Impermeable to negatively charged protein. Charged proteins present in cytoplasm. As a result, सेल के अंदर जो नेगेटिव प्रोटीन्स थे उसके लिए भी इम्परमिएबल है मेम्ब्रेन, तो ये बाहर नहीं जा पा रहे, ये अंदर ही रखे हुए हैं. तो अंदर इन तीन चीजों की वजह से नेगेटिविटी का माहौल बन गया है, -70 मिलीवोल्ट का माहौल बन गया हुआ है. समझ में आ गया. अब हमने कर ली है इम्पल्स जनरेशन. अभी तक तो सब रेस्ट पे है, सब मजे में है, कुछ करना ही नहीं, सब बहुत बहुत ज्यादा मजे में है. क्या फिजिक्स में 160 प्लस स्कोर करना अभी से तैयारी स्टार्ट करके नीट 2025 में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल. अब इसे कंक्लूड कर रही हूँ. एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज व्हाइल इट्स इनर सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. इट इज पोलराइज्ड. पोलराइज्ड के तीन रीजन है. पंप्स का रीजन है,
दूसरा रीजन है कि एट रेस्टिंग स्टेट मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम, तो पोटेशियम लीक आउट हो जाता है बाहर और सोडियम के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है। तीसरा रीजन है कि जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन सेल होते हैं वो बाहर नहीं, तो वो अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। Outer surface of axonal membrane possess a positive charge. Outer surface of the axonal membrane possesses, as a result, outer surface of the axonal membrane possesses possesses. As a result, outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge while its inner surface as a result, while its inner surface becomes negatively charged. And is polarized. It is polarized. बुढी भएपछि पढ्नु साह्रो पर्छ क्या भन्छ किन आन्टीले यो कन्भर्ट गरेको छ कन्कन गर्छ र नि छोड्नु ड्युटी र नजानु त्यसो त कसलाई पनि काम गर्नु मन पर्दैन नि, पैसा त चाहिन्छ नि। एज अ रिजल्ट आउटर सर्फेस आमालाई पनि त काम गर्नु मन पर्दैन, पुरा गन गर्नुपर्छ, तर आमालाई पनि त पैसा चाहिन्छ, सबैको त्यही हो नि, गन गर्छ तर छोड्नु सक्दैन किनकि पैसा चाहिन्छ जिउनुको लागि। अनि आफूले पनि यस्तै गर्छ है, म सोच्छु कि नानीहरूलाई पढाउँदा मलाई किन यस्तो झनाक झनाक कृष्ण तोडा छ नि, आमाको जिन्स डल्लै मेरो माग्छ, यस्तो घिनलाग्दो जिन्स मलाई चाहिएन। अस्ति मैले पनि आमालाई त्यो फेदा पेसेदा भन्दै थियो कि मसँग रिसाएर गरेको नि, अब नयाँ कुरा सुन्ने मान्छेलाई त नयाँ लाग्छ नि, आमालाई पनि जान्दछ र आमालाई इजी लाग्छ त, कराएर रिसाएर ठुस्केर गर्छ, जो मान्छेले केही जान्दैन त्यसलाई मात्रै पुरा रिस उठ्छ अरे हो। पोलराइज्ड के 3 रीजन है। पंप्स का रीजन है, दूसरा रीजन है कि एट रेस्टिंग स्टेट मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम, तो पोटेशियम लीक आउट हो जाता है बाहर और सोडियम के लिए ऑलमोस्ट As a result, outer surface of the axonal membrane possesses positive charge. तीसरा रीजन है कि जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन सेल के अंदर होते हैं वो गाबुशा के खानु मन छ, चिप्स खानु मन छ, पैसा न कौडी बजारमा टौडी खा, चिप्स खानु मन छ गाबु, त्यो दुध छ तेरो खा, जान लिएर खा। हैन मेरो त गएछ हराइसक्यो। यही छ त हौ, म देखिरहेको छु। आयो कान सुत्ले चाहिँ हैन, फेरि आँखा चाहिँ हराएछ, मलाई आँखा देख्दैनस् आँखा देख्दैनस् भन्दैन आफै त खर्को मान्छे बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वो अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल इतना आपने को बता दिया है। नर्व इम्पल्स मिलीवोल्ट जनरेशन कैसे होती है। अब एक्सॉन में नर्व इम्पल्स जनरेशन को समझने के लिए आप एक्सॉन कितना आलसी आता है ना अम्मा पढ़ाई करने में। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए आप कोई। मेरो खानेकुराको मात्रै आएको गरिसक्नु किन।
साह्रै खाउँ खाउँ गर्छु राखोला ज्यादा हेरेर राखेको होला नि त्यो पनि हो म साह्रो खाउँ खाउँ गर्छु किनकि म खानु पाएको छुइनँ के खानु मनपर्छ मलाई चिप्स खानु मनपर्छ जा लिएर खा त्यो पैसा नि दिइहाल्छु बिस्किटको खाँदिनँ तेरै घाँटी रहेछ साथ म हेल्दी फाइमी भएको भने त खाँदिनँ म हाई हाई जसले पचाउनु सक्दैन त्यो चाहिँ खाऊ है ऐसे कई सारे पार्ट्स में बांट लेती हूँ कि पहला पार्ट ए बोल देती हूँ, दूसरा पार्ट बी बोल देती हूँ, सी बोल देती हूँ, डी बोल देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए. ऑफ कोर्स एग्जाम पे कुछ ऐसा लगा थोड़े बहुत कि यार ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट, वो तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बांट दिया कि जो पहला पोर्शन है उसको ए बोल दो, जो उसके अगला पोर्शन है उसको बी बोल दो. ठीक है, तुम लोग रेडी हो नर्व इंपल्स जनरेशन और कंडक्शन समझने के लिए? और तुम लोगों को क्या मस्ती चढ़ती है ये बात बोलने के लिए कि मैम आप हर बार पेपर दे देती हैं, आप तो बहुत ज्यादा हमारा कंपटीशन बढ़ा देती. कितनी बार तुम लोगों को मैं ये बात बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ मैं कि मैं सर बायोलॉजी का पेपर देती हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा भी देती हूँ, मुझे कोई सीट थोड़ा भी चाहिए, तुम्हारा कंपटीशन कैसे बढ़ा? मैं तो सिर्फ पेपर इसलिए देती हूँ, एक तो अब एनटी अगर अपर एज लिमिट लगा देगा तो उसके मैं पेपर ही नहीं दे पाऊंगी. मैं तो इसलिए देती हूँ ताकि मैं बेटर टीचर बन सकूँ रे, ताकि मैं जान सकूं कि मुझे क्या चाहिए, क्या लैकिंग है कि मेरे 360 में 360 क्यों नहीं आ रहे. क्योंकि जो मुझे ही नहीं पता होगा कि 360 से 360 लाने के लिए क्या चाहिए, तो मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाऊंगी? मैं तो हर बार इसलिए पेपर देती हूँ कि मेरे आने चाहिए फुल मार्क्स, फिर वही चीजें तो मैं बच्चों को सिखाऊंगी. आ जाओ. सही है. थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसलिए अभी हम नहीं पढ़ेंगे. आ जाओ. Hi, I'm Vishwarupa, and once I enrolled myself in NMAM Institute of Technology. This was the place to be. From the cutting-edge labs to the real-world projects, to explore and apply what we learn in the classrooms to the real world. Here, it's not just about the academics. There's something for everyone, like vibrant cultural scenes, fests, and clubs. And all these things make a campus life more fun and enjoyable. And let's not forget about the industry exposure, providing us the opportunities to intern and network. NMAM Institute of Technology is not just an institute, it is a launchpad for your dreams. If you're looking for an engineering college, NMAM Institute of Technology is अब क्या है, स्टिमुलस लगा. एग्जॉन के पहले पार्ट पे आपने स्टिमुलस लगाया, ठीक है. अब आपने रेस्ट से हटना है, अब आपने इंपल्स जनरेशन करनी है. स्टिमुलस इज अप्लाइड एट साइट ए. पहली चीज क्या होता है, साइट ए में जो मेम्ब्रेन है वो सोडियम के लिए फ्रीली परमिएबल हो जाती है. देखो अभी तक सोडियम के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल थी मेम्ब्रेन रेस्ट में, अब वो परमिएबल हो गई. साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम. वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं. उससे क्या होता है, साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू एनी प्लस. कितना मुश्किल है परमिएबल. आई थिंक आई विल गो नाउ. ओके, मैं थोड़ा सा करके ना मैं चली जाती हूँ, मुझे बहुत ही मुश्किल
पता नहीं क्यों मुझे बैठना ही नहीं है, ऐसा हो रहा है। permeable to any plus. Permeable to any plus. Rapid influx of any plus. Rapid influx of any plus. I'll go up by all. जो भी है ना यहाँ पर, मैं चली जाती हूँ। शुभम, आई थिंक यू आर देयर राइट? बाकी कोई नहीं होगा। वो तो आ भी गया है। रात को कितने बजे से आओगी? नहीं, अभी ही आऊँगी। मुझे ना बस अभी ऐसे बैठे बैठे ना मुझे बैठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा ना, तो मैं जाके क्या करूँगी? मुझे नींद आ रहा है क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं लगा था ना, फिर भी मैंने राइस सुन के, तुम्हें तो पता ही है मुझे राइस कितना पसंद है, तो मैं खाना खाने चली गई ना। शायद वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए मुझे ना ज़्यादा नींद आ रही है इंसुलिन की वजह से। तो मैं थोड़ा चलूँगी, फिर नीचे दुकान में जाऊँगी, चिप्स खाऊँगी, उसके बाद में एक वो भी करूँगी, कॉफ़ी भी लेके आऊँगी, फिर मैं वापस आ जाऊँगी। मैं भी जा रहा थोड़ी देर में, थोड़ा ठूस कर। तुम्हें तो टाइम लगेगा ना खाने में, या सो स्लो, तो ना उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी। आई थिंक आज मेरा छोटा भाई ना आए, वरना वो मुझे बहुत ही परेशान करता है, खुद भी नहीं पढ़ता है, मुझे भी नहीं पढ़ने देता। वैसे वो मुझे पढ़ने देता है, मैं ही वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। उसके फ़ोन में अमंग अस गेम है ना, और वो मेरा फेवरेट गेम है। अमंग अस सुपर सस है, तो मैं भी देखने लग जाती हूँ उसके साथ। माई लेग्स आर पेनिंग, मैं अभी जाके घूम के आती हूँ। 6:30 होने ही वाला है। 6:30 तो नहीं बोलूँगी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा ब्रेक लूँगी इस बार। तुम भी तो उसको परेशान करती हो, क्योंकि वो तो छोटा है ना, मैं तो उससे बड़ी हूँ, और बड़े तो छोटे को परेशान कर सकते हैं। किसी ने मेरा ही लाइन मुझे ही चिपका दिया, जैक ने। हाँ, तो मैं 6:30 पे नहीं आऊँगी, लेकिन 7 से पहले आने की कोशिश करूँगी। हालांकि मैं जब ब्रेक लेती हूँ तो मुझे मेरा दिल करता है कि ब्रेक लेती जाऊँ, इसलिए मुझे और लेट हो जाता है। अभी के लिए बाय ऑल।